चीज़ तो माननी पड़ेगी यार सिंगापुर की, यार इट इज़ सुपर क्लीन, लाइक सुपर ग्रीन एंड सुपर क्लीन. गिव सिंगापुर माई रेटिंग वुड बी 10 on 10. ऐसा लग रहा है यहाँ पे अभी आके कि पूरा सिंगापुर यहाँ पे बैठा हुआ है सिंगापुर बोटानिकल गार्डन में. सो अगर आप हिस्ट्री वाइज भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 50 years बैक सिंगापुर डिडंट लुक लाइक दिस. सो बहुत ज़्यादा massive development हुआ है in the last 50-60 years. Though Singapore is extremely clean, extremely beautiful, but इस एरिया में आके एक अलग ही वाइब आती है ओवरऑल. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you. When the world is sleeping, do you think of me? हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. जो हमने अभी सेंटोसा की वीडियो फिनिश करी वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज लास्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी. एंड इन दिस वीडियो विल टेक यू टू द वेरी फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इट्स कॉल्ड द सिंगापुर बोटानिकल गार्डन. और अभी हम हैं सेंटोसा में. यहाँ से हम लेंगे बस नंबर 123 विच गोज़ टू बुकित मेरा टर्मिनल. एंड इट्स ऑलमोस्ट 40 minutes राइड. 23 स्टेशन के बाद हम उतर जाएंगे वहाँ पे. एंड टिकट प्राइस इज़ एक्सट्रीमली चीप. इट्स लाइक $1.5 सिंगापोरियन डॉलर्स. अगर हम ग्रैब से टैक्सी लेते तो इट वुड हैव बीन अराउंड $23 to $25. सो वी आर नॉट गोना टेक दैट ऑब्वियसली बिकॉज बस एकदम सामने था जहाँ पे हम अभी बैठे थे. एंड द बस विल डायरेक्टली टेक यू टू द स्टॉप फ्रॉम वेयर विल गो टू द सिंगापुर बोटानिकल गार्डन्स. I mean, if you're in a hurry, जैसे हम लोग पहले थे, then you can take a grab. But otherwise, time अगर आपके पास sufficient है, then you can of course take public transport. The public transport is actually pretty convenient और काफ़ी वेल कनेक्टेड है. सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सो वी कैन यूज़ आवर कार्ड. थैंक यू. सो जी, हमारे हिसाब से इट इज़ सुपर कन्वीनियंट टू टेक अ बस डायरेक्टली फ्रॉम हेयर टू द सिटी सेंटर. काफ़ी मतलब खाली पड़ी है बस, कोई है नहीं. एंड द प्राइसेस आर ऑल्सो नॉट दैट एक्सपेंसिव. इट इज़ लाइक $1 to $2 maximum. So if you bring in healthy snacks, they're going to help you walk around the city, which we're going to do a lot. And you're going to do a lot if you're in Singapore or anywhere you go basically, because walking is highly recommended. You're going to eat a lot of delicacies, so it makes sense to walk around. And finish off your 10,000 steps. तो जी, वी हैव गॉट डाउन एट आवर स्टेशन. एंड एक चीज़ तो माननी पड़ेगी यार सिंगापुर की, यार इट इज़ सुपर क्लीन, लाइक सुपर ग्रीन एंड सुपर क्लीन. मतलब मेरे को ये नहीं पता था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इंटायर सिंगापुर इज़ सो ग्रीन. मतलब हर तरफ आपको गार्डन, पार्क्स और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे मिलने वाले हैं. और आई मीन दिस, आई वुड गिव सिंगापुर, माई रेटिंग वुड बी 10 on 10 बिकॉज दिस इज़ सो गुड. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you. When the world is sleeping, do you think of me? With the road ahead's coming back again, coming back to me. Yeah. I remember the long drives, the late nights in your car. I remember it all. I can see the crowd. दिस प्लेस इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल एंड सो वेल मेंटेन्ड. मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आर्टिफिशियल है सब कुछ. I know, look at this. तब प्रिसिशन से सब कुछ रखा हुआ है ना. I can see that it's highly maintained. You can see the crowd. Yeah, so this is a concert that happens every evening. So you can come with your picnic blanket and you can sit and watch this concert for free. Really? Yeah. Let's see. But हाँ, फ्री है. एंट्री का तो कोई चार्ज था नहीं. But this is so green. This town's so quiet this time of year. With the road ahead's coming back again, coming back to me. I remember the long drives, the late nights in your car. ऐसा लग रहा है यहाँ पे अभी आके कि
पूरा सिंगापुर यहाँ पे बैठा हुआ है सिंगापुर बोटानिकल गार्डन में। अगर हम किसी और दिन आते तो ये काफ़ी एम्प्टी होता, बट बिकॉज इट्स संडे एवरीबडी इज़ आउट। एंड ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है ना कि अब मेरी टी शर्ट देखो, शर्ट पूरी गीली हो चुकी है। बट इट्स स्टिल फन बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी ग्रीन एंड मतलब बहुत पीसफुल है ओवरऑल। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल आई हैव सीन इन सिंगापुर। अभी तक सब कुछ खाली खाली लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि लोग कहाँ हैं, हमको दिख ही नहीं रहा। थोड़े यहाँ के पता चल रहा है अच्छा, प्रॉब्ली दिस इज़ वन वे ऑफ वन पास टाइम फॉर लॉट ऑफ पीपल। हाँ I feel hard, I feel fast, and my love for you will last forever, forever, forever ago. I feel hard, I feel fast, and my love for you will last forever, forever, forever. Those down in the streets, you were all I used to know. You and I. So we are at the Merlion Park and it has the iconic view of Marina Bay Sands. हम लोग आए हैं यहाँ पे इवनिंग का वाटर शो देखने के लिए एंड यू कैन ऑलरेडी सी इट्स सो लिट अप एंड अभी आई थिंक 15 मिनट्स में शो होगा, सो विल शो यू दैट। दिस बाय द वे अनदर एक्सपीरियंस, वो फेरिस व्हील भी है जिसमें आप जा सकते हो। दिस इज़ द बिगेस्ट फेरिस व्हील इट इज़ इन एशिया। सबसे बड़ा ऑफ कोर्स लंदन में है, बट एशिया का सबसे बड़ा सिंगापुर में है। Headlights on the highway. If you only knew, being back. अगर आप यहाँ नहीं आए तो मतलब आप सिंगापुर नहीं आए हो। and this is the main iconic symbol you can say. You'll see it a lot in pictures, reels and what not. हमारे पहले रिश्तेदार कभी सिंगापुर घूम के आते थे ना तो यही शॉट डालते थे, इससे पता चलता था कि हाँ भाई सिंगापुर गए। हाँ। But this to get a good picture of it you have to click it from there। मानो वो देखो उधर ब्रिज है ना, वहाँ पे ब्रिज पे भीड़ देखो, जिससे ऐसे लोगों के मुंह से पानी नहीं निकलता, वो कवर कर लेते हैं। उसके चक्कर में वहाँ ब्रिज पे इतनी भीड़ है, लाइक लिटरली ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया वहीं पे आ चुकी है। दैट्स क्रेजी। Forever, forever ago, and you used to drive me home. Now I drive alone. You and I. So ji, we are finally at the very famous and the most iconic place in Singapore. So this behind me is the Merlion statue, and जो Merlion है ना, ये official mascot आप बोल सकते हो of Singapore city, of Singapore itself। और इसका जो mascot है, इसके two parts हैं अगर आप देखोगे, the head is of lion and the body is of fish। तो जो lion है, it represents the actual Sanskrit name of Singapore, which was Singapura, जो कि एक बहुत ही famous dynasty है, उससे belong करता है। And the body is of fish, which represents the actual fishing community that used to be here. So अगर आप history wise भी देखोगे तो almost 50 years back Singapore didn't look like this. So बहुत ज़्यादा massive development हुआ है in the last 50-60 years, and right now it is one of the most developed countries in the world. So there is a huge crowd watching the light and water show. This is called Spectra और ये हर रोज़ 8 बजे होता है and this is completely free. This is just next to Marina Bay Sands. So ji, that was the Merlion Park. I think it has to be one of the most beautiful places in Singapore. और यहाँ से जो सिंगापुर की स्काईलाइन नज़र आती है वो तो खैर बहुत ही अमेजिंग है। राइट नाउ वी आर जस्ट सिटिंग ऑन अ साइड वॉक। मस्त मेरे पीछे आप देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल है, लाइक पिंक फ्लावर्स, super well maintained, super clean. We are just taking a break, eating our snacks from 7-Eleven before we head out to our final spot of the day, which is one of the most iconic Hawker Street. ये बहुत famous है but less visited by a lot of people. Reason being कि थोड़ा सा Merlion Park और इस वाले एरिया से थोड़ा कम लोग उधर जाना पसंद करते हैं। But once we are there, then we'll show you what it's all about. It's highly recommended actually on Google, so that's why we want to go there and eat some good meals. बहुत भूख लगी है। Can I have Just a some? beginning. Though Singapore is extremely clean, extremely beautiful, but इस एरिया में आके एक अलग ही वाइब आती है ओवरऑल। And I think you should definitely take a walk over here or the Orchard Street. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you. When the world is fading
think of me with the roads coming back again. आई मस्ट से सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड है. अगर मैं यूज़ कर सकती हूँ देन एनी बडी कैन यूज़ इट. आई कैन टेल यू दैट. आई एम डायरेक्शनली चैलेंज एज आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ. तो अगर मैं यूज़ कर पा रही हूँ आई थिंक यू कैन यूज़ इट टू. So ji, after that 10 minutes of ride, we have reached the Tiang Boru area to visit one of the most iconic food market or the hawker market that you can call it of this place. So हम लोग आए हैं यहाँ की एक बहुत ही बड़ी hawker market में which is called the Tiang Boru market. और यहाँ पे हम लोग इसलिए आए because we wanted to explore the kind of a local side of Singapore where locals eat. And this place is extremely famous. So we are right now walking over there. Okay जी, so हमारा बहुत ही बुरा एक पोपट हो गया. पोपट हो गया. एंड रीज़न बीइंग कि हमें जहाँ जाना था, जहाँ के लिए हम आए थे इतनी दूर, द वेरी फेमस त्यांग बोरू नाइट मार्केट, वो बंद है. गूगल पे गलत टाइमिंग दी हुई थी, इतनी देर वॉक करके आए, बट सैडली इट्स क्लोज्ड. बट कोई बात नहीं, नाउ वी आर हेडिंग ऑफ टू अनदर प्लेस बिकॉज वी जस्ट हैव टू हैव अ नाइस फूड. त्यांग बोरू हम फिर से आ जाएंगे. And yeah, let's go somewhere else and take you along as well. Now we are walking to an Indian restaurant called Salam Bombay. इसके reviews काफ़ी अच्छे थे. It was very nearby to Tiang Boru night market. So हम वहीं पे walk करके जा रहे हैं and आज हमारा एक unplanned Indian meal खाने का plan बन चुका है. So जी, I think this is the best way to finish off the day than having some Thai food at an Indian restaurant. हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में आए थे और हमने मन बना लिया था कि हम इंडियन खाना खाएंगे. बट यहाँ पे आके इन्होंने बोला कि कम से कम आधा घंटा लगेगा एंड थाई फूड जल्दी आ जाएगा, तो आप वो मंगा लो. तो वी वर लाइक चलो ठीक है, मे बी थाई फूड वाज मिसिंग अस, सो वी हैविंग दैट. इट लुक्स रियली गुड और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग. हमें हॉकर में हर जगह कम क्वांटिटी दिखी है, बट दिस लुक्स रियली गुड. चलो भाई, आई कांट वेट टू फिनिश ऑफ द फूड एंड कॉल इट अ डे. ये लाइट कैसे बदल रहे हो तुम? चलो जी, स्टार्ट. Hoping that my love for you will last forever, forever, forever. Goes down. सुजीत, फूड वाज गुड अपेरेंटली. सो गुड. काफ़ी अच्छा था, मतलब मज़ा आ गया खाने के बाद. और अभी हमारा कैमरे की बैटरी वगैरह सब डेड हो गई, सो वी रिकॉर्डेड फ्रॉम आवर फ़ोन. ऑडियो थोड़ी ग्लिच होगा, सो प्लीज़ डोंट माइंड. एंड वी पेड अराउंड 25 सिंगापुर डॉलर्स फॉर लाइक 2 लोग का भर के खाया हमने. इट वाज ठूस के वेरी खाया. गुड. क्वांटिटी Yeah. बहुत अच्छी थी. द रेस्टोरेंट इज़ कॉल्ड सलाम बॉम्बे, बट उनका ही एक थाई रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे हमने थाई फूड खाया. इंडियन फूड में काफ़ी वेटिंग थी. वही मीरामार मीरामार होटल. बाकी एनीवेज, अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ. वी आर हेडिंग ऑफ टू द बस स्टैंड एंड देन विल टेक अ बस एंड रीच आवर होटल इन अनदर 30-40 मिनट्स. बाकी कल का दिन हम एक्सप्लोर करेंगे चाइना टाउन, लिटिल इंडिया, लॉट ऑफ trendy streets in Singapore, which you're gonna see Yes. in the next video. So make sure that you subscribe for the upcoming videos from Singapore. Baki, thank you so much. Bye bye. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you.